हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शरद केडिया, आपका फ्रेंडली कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजियाट्रिस्ट यानी पीएमआर फिजिशियंस कौन होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके पास और कैसे वो अपना प्रैक्टिस को किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि हु आर दिस फिजियाट्रिस्ट। फिजियाट्रिस्ट कौन होते हैं? सो फिजियाट्रिस्ट, जिनको पीएमआर फिजिशियंस भी बोला जाता है, जिनको रिहैबिलिटेशन फिजिशियंस भी बोला जाता है, और उनके फील्ड को कभी कभी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन भी बोला जाता है। इनफॉर्मली लोग इन्हें रिहैब मेडिसिन भी बोल देते हैं, रिहैब मेडिसिन एक्सपर्ट्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है? फिजियाट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच एम्फेसाइजेस द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसऑर्डर्स दैट प्रोड्यूस टेम्पररी या परमानेंट फंक्शनल इम्पेयरमेंट। मतलब ऐसी डिजीजेस जो कि आपको फंक्शनली इम्पेयर कर देती है, जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो अक्यूट हो या क्रॉनिक हो। उन सब का ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना और कंप्लीट मैनेजमेंट करना, ताकि आप दोबारा वो एक्टिविटीज़ अच्छे से अच्छे वे में कर पाए। इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। और जो फिजिशियन इसमें अपनी ट्रेनिंग करता है उसे फिजियाट्रिस्ट बोलते हैं। जैसे मेडिसिन में करने वालों को फिजिशियन बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में करने वालों को ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं, सिमिलरली। सो इट्स अ कंप्लीट मेडिकल ब्रांच। नाउ फिजियाट्रिस्ट इज प्रोनाउंस एज फिज ई एट्रिस्ट, फिजियाट्रिस्ट। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन आपको ये लग रहा होगा कि फिजियाट्रिस्ट वो लोग हैं जो कि सिर्फ जिसको इंजरी हो गई है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कोई हाथ में इंजरी हो गई है, उन्हीं को ट्रीट करते हैं। बट ये ऐसा नहीं है। सिर्फ इसके अलावा भी हम लोग जो भी इलनेसेस हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, क्रॉनिक कंडीशंस हैं, इन सारी की सारी कंडीशंस में हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारा गोल बेसिकली इन सब सिनेरियोज में ऐसा होता है कि हम लोग रिस्टोर करना चाहते हैं एज मच एज पॉसिबल द मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ द पेशेंट एंड देयर एबिलिटी टू मूव। और ये सब करने के लिए हम लोग को एक्सपर्टाइज लेना पड़ता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एज वेल। सो हम लोग ये ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज को मास्टर करते हैं जो कि इन्वॉल्व करता है मेडिसिन, मूवमेंट, ब्रेसिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड अदर नॉन सर्जिकल अप्रोचेस टू ट्रीट इम्पेयरमेंट इन दिस बॉडी पार्ट। अब मैं नॉन सर्जिकल बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर्जिकल बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। सर्जिकल पार्ट हम लोग का डिफॉर्मिटी करेक्शन में आता है। बट जैसा कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सारी फैसिलिटीज़ एक ब्रांच में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ एरियाज़ जहाँ पर पीएमआर की टीचिंग होती है वहाँ पर सर्जरी ज़्यादा एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस की जाती है, कुछ जगह पे पेन मेडिसिन ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, कुछ जगह पे रिमोटोलॉजी एंड ओवरऑल रिहैबिलिटेशन ज़्यादा अच्छा काम करता है। सो ऐसा होता है। सो इन मेनी वेज फिजियाट्रिस्ट आर सिमिलर टू नॉन ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड दे इवन वर्क क्लोजली विद ईच अदर इन द सेम ऑफिस। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑलरेडी इस्टेब्लिश फील्ड्स हैं, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिजीज मैनेजमेंट है रिहैबिलिटेशन। और व्हेन यू सम टोटल द क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, देन यू गेट द बेस्ट आउटकम फॉर द पेशेंट मैनेजमेंट के लिए। सो हमारा क्या अप्रोच है? हमारा एक टीम अप्रोच होता है, वेयर देयर इज एन इंटरडिसिप्लिनरी मेडिकल टीम, जिसमें कि मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि हम फिजियाट्रिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हो गए, यूरोलॉजिस्ट हो गए, एंड नॉन फिजिशियन हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, वोकेशनल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड अदर्स। दोनों का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेडिकल हो या फिर नॉन फिजिशियन हेल्थ प्रोफेशनल्स हो, इसलिए हम यहाँ किसी को भी अंडरमाइन नहीं करते। एंड एज आई सेड, इट्स अ टीम अप्रोच, सो एवरी टीम मेंबर कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पेशेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीम इज़ डिफरेंट फॉर ईच पेशेंट। सो सपोज कोई स्ट्रोक का पेशेंट है जिसमें बोलने की दिक्कत आ रही है, जिसको अपीजिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उनमें एक स्पीच थेरेपिस्ट भी रहेगा। सो टीम का कॉम्पोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द treatment to match the patient's shifting needs. By providing an appropriate treatment plan, we help the patients stay as active as possible at any age. The ultimate goal is to maximize the independence, dignity, and quality of life in all the aspects, whether it's physical, psychosocial, psychological,
vocational, educational, or occupational. So there is an overall enhancement in the patient's life. The main components of PMR initially was thought to be musculoskeletal medicine, neurorehabilitation, cardiopulmonary rehabilitation, interventional physiatry. But with later part of the century, more fields were also added. So now we have almost every field, something or other, they can uh, devote to the PMR. Like in geriatrics, we have geriatric rehabilitation, pediatric rehabilitation, burn rehabilitation, cancer rehabilitation. For the visually impaired, we have rehabilitation measures, vestibular rehabilitation, spinal cord, stroke, and traumatic brain were all before. So we cater from pediatric to geriatric, everyone. Now, how does this go? How does this happen? So patient comes to us, physiatrist. So we assess the patient, we list down the goals, we make a treatment protocol, then this and we send the patient to the therapist. Now the therapist will also work with the patient, and he will have some of his own assessments, and he'll come back to the doctor, that is the physiatrist, and they both will consult and work upon the common treatment goals, and the patient will also give a feedback like how it is working now. So now when we talk about the armamentariums which is available at our disposal, means हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज होती है, तो हम लोग मेडिसिन या सर्जरीज जैसे मैंने बताया था बीच में आपको, वो सारी चीज़ करते हैं. इसके अलावा हम लोग बहुत इंटरवेंशंस भी करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड, सीएम गाइडेड. अभी इंटरवेंशंस की बात करें तो ये हम लोग पेन रिलीविंग प्रोसीजर्स करते हैं, हम लोग रीजनरेटिव प्रोसीजर्स करते हैं, हम लोग डिफॉर्मिटी करेक्टिव्स इंटरवेंशंस करते हैं. तो बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं. देन वी हैव फिजिकल मोडालिटीज, फिजिकल थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस जो कि जैसे नकली हाथ पैर लगाना या फिर कोई सपोर्टिव डिवाइसेस लगाना, असिस्टेड डिवाइसेस चलने फिरने के हिसाब से, क्रच कीन वगैरह, व्हील चेयर्स, यूरोडायनेमिक स्टडी, गेट एनालिसिस लैब इंक्लूडिंग EMG, electrodiagnostic studies including EMG, NCV, and counseling and advices which is a part of every doctor. Now what are interventions for musculoskeletal, neuromusculoskeletal pain do I do? So I do musculoskeletal USG guided, ultrasound guided, all diagnostic and therapeutic interventions of the joint, as you can see on screen, all kind of nerve blocks, all regenerative procedures, spinal interventions, mainly cervical nerve root block, quadrilateral block, shoulder hydrodilatation, median nerve hydrodissection, stress fracture management by PRP, and CARM I do spinal interventions mainly of the lumbar spine, transforaminal, quadrilateral ganglion power blocks, lumbar root blocks, knee genicular nerve blocks, Cassini nerve blocks, sphenopalatine blocks. By the way, ये जो ब्लॉक्स वगैरह का बोल रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी पेशेंट्स में दिया है और एक टेस्टिमोनियल भी मैंने अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं कि किस पेशेंट को कितना फ़ायदा मिला था. कुछ पेशेंट्स के रिव्यूज़ ही हैं बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है वो, बट उससे फेयरली एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना रिलीफ मिल सकता है रियल लाइफ में पेशेंट को. सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमें क्या क्या केसेस दे सकते हैं. तो हर एक डिपार्टमेंट जैसा मैंने बोला कि हमें कुछ ना कुछ केस दे सकता है. जैसे कि ऑर्थोपेडिशियंस की बात करें हम लोग तो पोलियोमाइलाइटिस, लेप्रोसिस सीक्वली, जो पोस्ट लेप्रोसी वगैरह की जो डिफॉर्मिटीज रह जाती है उसकी मैनेजमेंट में, मस्कुलोस्केलेटल कोई भी तरह का इशू, लो बैक पेन, नेक पेन, बैक पेन, चेस्ट में पेन होना विच इज़ नॉन कार्डियोजेनिक इन ओरिजिन, टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, लिगामेंटस इंजुरीज, डीजेनरेटिव कंडीशंस, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फ्रैक्चर्स, पोस्ट फ्रैक्चर्स, एम्पुटेशंस. न्यूरोलॉजी में सारे न्यूरोलॉजिकल, पोस्ट न्यूरोलॉजिकल केसेस लाइक स्ट्रोक, पैराप्लेजिया, सेरेब्रल पैल्सी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मायोपैथीज, स्पाइना बाइफिटा, नर्व इंजरीज, सारे केसेस. मेडिसिन वाले हमें डायबिटिक फुट, इंसेंसेट फुट, प्रेशर अल्सर, COPD, एस्थमा, पोस्ट कोविड केसेस, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सारे दे सकते हैं. न्यूमेटोलॉजिकल हम लोग सारे देखते हैं बट मेनली RA, स्पॉन्डलोआर्थ्रोपैथी एंड ऑल टाइप ऑफ आर्थराइटिस. बाय द वे मैं एक यूलर में सर्टिफाइड कोर्स भी कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, ताकि अपनी नॉलेज एनहांस करके न्यूमेटोलॉजी के केसेस को और ट्रीट कर सकूँ, जो कि 2023 में कंप्लीट होने वाला है. सो विश मी ऑल द बेस्ट फॉर दैट. पीडियाट्रिक केसेस में प्रीमेच्योर बेबी, सेरेब्रल पैल्सी, जुवेनाइल RA, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, ये सारे पेशेंट्स को हम देखते हैं. ऑन्कोलॉजी वाले मैंने तो एक पैलेटिव केयर में एक सर्टिफाइड कोर्स भी कर रखा है, जिसकी वजह से मैं पैलेटिव केयर के केसेस भी देखता हूँ. बट OPD बेसिस पे यूजुअली हमारे पास पोस्ट मैस्टेक्टोमी लिम्फेडिमा वेरी कॉमन केस. ठीक है. इसके अलावा पैलेटिव केयर के हिसाब से हमारे पास और पेशेंट्स आते हैं पैलेटिव केयर रिहैबिलिटेशन के लिए.
पेन मेडिसिन में हर तरह का पेशेंट, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, मेनली क्रॉनिक ज़्यादा आते हैं ओपीडी में। ईएनटी वाले हमें वर्टिगो, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ के लिए पेशेंट भेजते हैं। डर्मेटोलॉजी में अगेन लेप्रोसी, सोरियासिस के कारण कोई आर्थराइटिस वगैरह होती है, डिफॉर्मिटीज़ होती है, वो सब भेजते हैं। ओबीजी वाले हमें कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, लो बैक पेन प्री एंड पोस्ट डिलीवरी, ये केसेस भेज सकते हैं। यूरोलॉजी वाले हमें न्यूरोजेनिक ब्लैडर बाउल के केसेस, अगर कोई लॉइन पेन हो रहा है जो कि रीनल स्टोन के कारण नहीं है, स्टोन है लेकिन रीनल उसके कारण उसको पेन नहीं हो रहा है, तो उसका भी असेसमेंट एंड मस्कुलोस्केलेटल पेन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। कार्डियोलॉजी वाले सारे कार्डियक केसेस पोस्ट प्री एंड पोस्ट रिहैबिलिटेशन के लिए भेजते हैं हमें। एंड सेक्स एंड कॉइटस रिलेटेड इश्यूज वी ट्रीट एज वेल। अब बात करते हैं रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन इन इंडियन सेटअप। सो जब इंडियन सेटअप की बात करते हैं हम, तो ये देखिए डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है लोएस्ट है, मतलब पेशेंट इतने ज़्यादा है कि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, और पॉपुलेशन इज़ मोर देन अ बिलियन। सो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में जो है डिजेनरेटिव कंडीशन से सफ़र करता है, और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को पोलियो, लेप्रोसी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक, एम्पुटेशंस कुछ ना कुछ होते रहता है। तो यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ केसेस की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट विद द न्यू इम्प्रूव्ड न्यू बॉर्न केयर सिस्टम, आजकल जो प्री टर्म और बर्थ रिलेटेड जो बेबी सर्वाइवल है, उसके कारण incidence of cerebral palsy has increased to a very high extent, and chronic diseases like hypertension, diabetes mellitus, degenerative joint disease, spinal and other musculoskeletal diseases are on the rise. But हमारे फील्ड में challenges भी हैं definitely. One of the most common challenges is lack of awareness. Rather than the lack of availability, I would say it's the lack of awareness, which is a major challenge. So majority of the population is unaware of the specialty, including the medical professionals. They don't tend to recognize this department, because mostly they confuse PMR with psychiatry. When I say PMR or physiatry, they confuse it as psychiatry, or some might confuse it as physiotherapy. So these are all part of it, but they do not tend to recognize the branch as a whole. So the necessary and benefits of PMR are grossly underutilized, and there's a pressing need for patients' education and information as well. The next question which you might think is, how are we trained? So initially we do training like anyone else, like we do MBBS, and then we go for MD or DNB-PMR. After that we go for fellowships if required, like cancer rehabilitation, musculoskeletal rehabilitation, neuro rehabilitation, spine rehabilitation, or interventional spine, interventional physiatry, then sports. There are different courses you can do in India as well as outside. And also if you want to do further a doctorate in medicine, so you can do a DM in pain medicine. AIIMS Rishikesh provides such facility. AIIMS Jodhpur has such facilities. AIIMS Jodhpur has fellowships as well in pain medicine, and international courses like FIPP and CIPS can also be done. So let's talk about prescription. How do we prescribe? How is our prescription different from anyone else? So as like any prescription, what we do is we make a diagnosis, we give a brief history and clinical examination, and we provide treatment. While providing treatment, we also assess whether the patient needs any kind of intervention, pain relieving procedures. So we mention that, and then we make a comprehensive rehabilitation protocol, which is individualized and custom tailored for each and every patient. That protocol will consist of entire team, as we had discussed before. So it will have a physiotherapy role, occupational therapy role, process and orthosis if anything is required, and speech therapy required, and allied health members like psychological counseling and other things. At the same time, we'll give the patient and caregiver both equal value and equal counseling. So what are the 5 great reasons to become a physiatrist now? So when we talk about the 5 great reasons to become physiatrist, one is high or at par salary. Why I say is high salary, because our number is less, as I mentioned time and again. So our number is less, but the demand is more. Everywhere the PMR branches are rising up, because people are realizing the rehabilitation potential. And also NMC has made it mandatory for all the colleges and hospitals to have a PMR branch or PMR person in their respective departments, respective institutes. So that is another empowering factor for the physiatrist. Second thing is, you have a wide variety of patients. Your patients will be plethoric. You will have all the kind of patients in your practice. There will be a work-life balance, because once you are becoming consultant, you don't have to do night duties and all. That will be usually done by junior doctors.
and there's no such emergency situations apart from one or two, which can obviously be managed if taken proper steps are taken, at the right time. And so you have all the time in your after practice to give to your family, devote to your life to your family, and so you have a very good work-life balance. Next is evolving field with newer treatment approaches. So you get to know new treatment approaches, and what you see is real changes in real life, real quality of life, in real in the quality of life of the people. Now talking about the career options. So it's a diverse field, as we said, with an overwhelming amount of career options. So you can choose between academic versus private, inpatient versus outpatient, primary versus consultant based work, or a combination of any of this. But usually people choose a mix of the practice. Now, so major portfolio can be, corporate setups in the hospitals and clinics, entrepreneurship. You can open your own setup and you can do your own clinics or run a full-fledged rehabilitation center. Freelancing, you can do pain management here somewhere, you can do a consultation like that, you can do freelancing. You can enter into research as well. You can go for non-governmental organizations, a specialty clinic like the diabetic foot clinic or post-COVID rehabilitation clinic, or you can have an entire rehabilitation setup. If you go for medical colleges, you have to go as a senior resident, associate, assistant professor, associate professor. AIIMS like places will have an additional professor. Otherwise, additional professor is usually not in private medical colleges, and you'll soon become a professor because the number is less, so you'll climb up rank higher. So this is another one of the compelling reasons for you to take a PMR. Then DM pain medicine also, you can go for a pain specialist practitioner alone, and you can become a rehabilitation physician and practice the entire variety in its entirety. So this has been my career. Again, I have given a YouTube lecture regarding the same and why I taken a YouTube initiative as well as the website initiative to strive. And I hope I'll see you in another video. Thank you. Thank you for your patient listening.